Okay, so good morning, students. Can you all see the screen? Yes? Yes, ma'am. Okay. Okay, so in the last class, we have discussed chemical synapse as well as electrical synapse. I hope you all are clear about the topic. And today we will be discussing about types of neurons. So neurons also, it has got various types. First is sensory, motor and interneurons. So these are the types of neurons. तो हम लोग को टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में भी तीन प्रकार का मिलता है वो है सेंसरी मोटर और इंटरन्यूरॉन्स सो दिस आर द थ्री न्यूरॉन्स दैट यू विल फाइंड इन द nervous system. Okay, so first let's talk about the sensory neurons. So in the sensory neurons, they helps you all in what? They helps you all in sensing something. They helps you all in knowing something. That is what? You can know the taste. Yeah, you can know the smell. You can hear it. You can hear the sound. You can see it. You can also feel things which is around you. So these are the things that you can know it. You can understand it. So ये सेंसरी न्यूरॉन्स में क्या क्या मिलता है सेंसरी न्यूरॉन्स को हम लोग को कुछ महसूस करने के लिए मदद करता है जैसे कि टेस्ट ठीक है जिब्बा तो नेक्स्ट है सूंघना स्मेल हियर मतलब सुनना सी मतलब देखना फील थिंग्स अराउंड मतलब महसूस करना हम लोग का सराउंडिंग्स में ओके डिड यू अंडरस्टैंड सेंसरी न्यूरॉन्स yes did you understand Yes, ma'am. okay okay next is motor neurons so motor neurons they help you in both things it is voluntary and involuntary so any one of you remember what they mean by voluntary anyone voluntary means what We can control. which you can control. Is it? Yes. Okay. So the motor neurons helps in what? They helps in both things that voluntary and involuntary means which you can control as well as you can't control. Understand? And which you can't control means what? Involuntary. Involuntary means what? Like for example, let's say the system, like for example, digestive system, cardiovascular system, reproductive system, all these things you can't control it. Isn't that it? It's happening automatically. That one is known as involuntary. So the motor neurons, they helps you in both voluntary as well as involuntary. Voluntary means which you can control. Say for example, like you want to take a walk, you wanted to run, you wanted to move around. So all these things are voluntary, which you can control. Understand? So the motor neurons, they help you in both things. It is voluntary and involuntary. And these neurons that is found in the motor neurons, they helps you all in what? They helps you all in allowing the brain and the spinal cord to communicate. You got it right. In the central nervous system, you've got the brain and the spinal cord. So they helps you in what? The brain, I mean the brain and the spinal cord, they communicate with each other. Like what? Like muscles, organs, glands, which are all over your body. I have said this now, no? Muscles. Muscles means what which you can control. Organs, like for example, I've already said, say for example, heart, and say for example, the female reproductive system. We have got no organs, some organs. So all these things comes under involuntary movement. And glands, glands such as endocrine glands, hypothalamus, all these things. Pituitary glands, pineal glands. So all these things comes under the glands. So the motor neurons, they helps you in controlling like what to say, voluntary as well as involuntary. तो मोटर न्यूरॉन्स में हम लोगों को क्या मिलेगा ये मतलब हम लोग को मदद करता है
दोनों साइड में, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी। वॉलंटरी मतलब जो हम लोग खुद कर सकते हैं, और इनवॉलंटरी मतलब जो अपने आप हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अपने आप हो जाता है, जैसे कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम लोग तो कंट्रोल नहीं कर सकते है कि नहीं, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप हो जाता है, तो उसके कारण हम लोग इनवॉलंटरी बोलते हैं। तो ये जो मोटर न्यूरॉन्स है, तो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये लोग कम्युनिकेट करते हैं एक साथ। तो कम्युनिकेट करके क्या होता है, कम्युनिकेट करके ये मसल्स, ठीक है, मसल्स हम लोग को वॉलंटरी में मिलेगा, जो कि हम लोग को खुद कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि दौड़ना, चलना, भाग दौड़ करना, वो सब हम लोग कर सकते हैं। और ऑर्गन्स जैसे कि इनवॉलंटरी में आएगा, जैसे कि हार्ट, ठीक है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ऑर्गन्स है, वो सब हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, और ग्लैंड्स भी हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, वो सब। तो इस ये हो गया मोटर न्यूरॉन्स। So in this, in this motor neurons also you will find two types. It is lower and upper neurons. Okay, motor neurons. So the brain, I mean this lower motor neuron. What do they do? This lower motor neuron. They used to carry signal. Okay, they used to carry signal from where? From the spinal cord to the smooth muscles. Smooth muscles. We will. So you have got two types of motor neurons. First is lower and upper neurons. Okay, so lower motor neurons, where will you find? Yeah, they used to, what do they do? These lower motor neurons, they used to send signal from the spinal cord to where? To the smooth muscle and the skeletal muscle. Understand? So smooth muscles, like where will you get these smooth muscles? Smooth muscles you will be getting in the part where you can't control. Say for example, cardiovascular system, not cardiovascular system, all this digestive system, reproductive system, all these things you will be finding the lower motor neurons. And the skeletal muscles which you can control. Understand? And the next one, upper neurons, the upper neurons, upper motor they do. They used to carry signal the brain, the spinal. You can pass information to the different organs, like what to do, what not to do. So these are the parts of motor neurons. Is it clear? Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so this is just the example of lower motor neurons. So for example, let's say the spinal cord, they send signals, right? From the brain to the spinal cord, they send signals to whom? The smooth muscles. Say for example, they have sent signal to the digestive system, that is the GIT, gastrointestinal tract. So they send signal to whom? To esophagus, stomach, intestine. So that what will happen? Uh, so that they can perform their function, so that they can help you in digesting the food which you taking. तो हम लोग को लोअर मोटर न्यूरॉन्स में एक एग्जांपल दिया है मैंने। तो यहाँ पे क्या होगा, जो ब्रेन है इस स्पाइनल कॉर्ड को मैसेज भेज देगा। तो कैसे कैसे भेजेगा, किसको भेजेगा? स्मूथ मसल्स। तो अगर स्मूथ मसल्स में उसको मैसेज भेज दिया तो क्या होगा, सपोज से फॉर एग्जांपल उसने डाइजेस्टिव सिस्टम को मैसेज भेजा है, इंफॉर्मेशन भेजा है, किसको? इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सबको इंफॉर्मेशन पास किया है इसमें। ठीक है, और वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे हम लोग को क्या मिलेगा? डाइजेस्ट मतलब खाना डाइजेस्ट होने के लिए ये मदद करेगा।
ठीक है, समझ में आया? Did you understand everyone? Okay, so next is interneurons. So interneurons, they are found where? They are found in the brain and the spinal cord. And you will find that the interneurons, they send signal from the sensory neurons and other interneurons. Understand? And they help in what? These interneurons, they help in okay, they help you in reacting to external stimuli. External stimuli like what? Say for example, like if something is occurring, if something is happening outside your body, so they will help you. So they will help you to react in that situation. Say for example, I've given this example. Suppose you have kept your finger just above the candle. So obviously you feel hot, isn't it? So what will you do? Obviously, you will remove your hand from the candle. So that one is it comes under what? It comes under these interneurons. Understand? They helps you in what? They helps you in reacting. They helps you in reacting something like if something mm, harmful things or if something like not good to your body or not good for you is occurring outside your body. So these interneurons, they help you in reacting into that situation, into that thing. तो इंटरन्यूरॉन्स में क्या मिलेगा? इंटरन्यूरॉन्स में हम लोग को सेंसरी न्यूरॉन्स सॉरी इंटरन्यूरॉन्स में हम लोग को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दोनों मतलब मिलता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या मिलेगा? यहाँ पे इंटरन्यूरॉन्स सिग्नल पास करता है, कहाँ से? सेंसरी न्यूरॉन्स से लेके एन और इंटरन्यूरॉन्स दूसरा दूसरा इंटरन्यूरॉन्स को मैसेज भेजता है। और यहाँ पे क्या होता है? इंटरन्यूरॉन्स पे जो छोटा छोटा चीज है, मतलब हाँ, जो हमारे शरीर के बाहर जो है, तो मतलब एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है, ये मतलब रिएक्ट करने में मदद करता है, ठीक है। जैसे कि बोलो, एक एग्जांपल देती हूँ। एक कैंडल है और अगर सपोज बोलो कि तुम्हारा हाथ में लग गया, तो क्या होगा? अगर तुम्हारा हाथ में लग गया तो वो गर्म है और तुम्हारा शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जो फिंगर्स है, मतलब उंगली है, वो जल जाएगा, है कि नहीं? तो इसके वजह से तुम क्या करोगे? तुम्हारा हाथ वो कैंडल से मतलब दूर रखोगे, है कि नहीं? तो उसको बोलते हैं इंटरन्यूरॉन्स। मतलब जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई है, मतलब जो तुम्हारे शरीर के जो बाहर है, वो मतलब तुम रिएक्ट करने के लिए ये मदद करता है, क्योंकि मैसेज भेजता है कि नहीं? सिग्नल भेजता है सेंसरी न्यूरॉन्स को, और इंटरन्यूरॉन्स को भी भेज देता है, मतलब ब्रेन भेज देता है इंफॉर्मेशन। तो इसके वजह से तुम्हें रिएक्ट करने के लिए टाइम देता है। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट इंटरन्यूरॉन्स? Okay, did you understand? Yes, ma'am. Okay, next is brain. So now let's talk about brain. So if I say brain, what comes to your mind? It is the center of your thoughts, it's not it? So whatever you do, whatever you are planning to do, so your brain is like controlling over everything. Understand? Like your daily activities which you are performing every day. So all this, who is controlling them? Your brain. तो ये ब्रेन क्या है? ये ब्रेन मतलब जो सारे चीजें तुम लोग करते हो रोज, तो वो सब ये ब्रेन इंफॉर्मेशन पास करता है कि नहीं? तो उसको तो इसलिए उसको सेंटर ऑफ थॉट्स बोला जाता है। तो ये मतलब सो दिस ब्रेन व्हाट डू दे डू? दे हेल्प्स यू इन interpreting the external environment. Interpreting the external environment means what? Means whatever things are occurring around you,
means within, I mean, in the environment, whatever things are occurring, the brain, they helps you in understanding it. Understand means if anything is happening or occurring around you, the brain they helps you in making you understand. Understand means they helps you in knowing the thing. तो ये ब्रेन मतलब सेंटर ऑफ थॉट्स है, जो हम लोग सोचते हैं, ठीक है, जो तुम्हारे डेली लाइफ में जो होता है, तो तुम क्या करोगी क्या नहीं करोगे, ये जो ब्रेन ये सब तुम्हें इंफॉर्मेशन पास करता है। और जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब जो बाहर का चीजें में जो होता है वो समझने के लिए ये मदद करता है, समझाने में मदद करता है। और ये मतलब हम लोग का पूरा शरीर को कंट्रोल करता है, एंड इट ऑल्सो कंट्रोल्स ऑल ओवर योर बॉडी। So the brain has got various parts. So the first one is known as cerebrum. Next is diencephalon. This one. Next is what? Next is brainstem. Next is cerebellum. So these are the parts of the brain. तो हम लोग को 4 parts का मिलेगा brain. ठीक है, एक है cerebrum, दूसरा है डायनसेफेलॉन, तीसरा है दिस वन ब्रेनस्टेम, 4 नंबर क्या हो गया सेरिबेलम। So these are the 4 parts of brain. So in the diencephalon, what will you get? Here you will be getting hypothalamus and thalamus. Hypothalamus and thalamus. In the brainstem, what will you get? You will get the midbrain. You will get pons, this one, and medulla oblongata and cerebellum. The last one is cerebellum. So these are the parts of the brain. So now let's talk about cerebrum. तो अभी हम लोग cerebrum के बारे में discuss करते हैं. So from the picture itself, you can just say, right, this cerebrum is the largest part. It's not it. From even the size compared to the other parts, it is the biggest and it is the largest. It's not it. So you can say that the cerebrum, they are the largest part of the brain, and you will find that in the cerebrum, it is divided into 2 parts. It is the right and the left hemisphere. So this is the cerebrum. So in the cerebrum, you will get both right and the left hemisphere, right and left. So what do? The cerebrum, they help you in what? They help you in functioning some higher functions. Like for example, interpreting. Interpreting like what? Interpreting. Say for example, it helps you in making you understand something. Making you understanding something. Okay, that is interpreting touch. Like with the touch of something. Suppose if you touch something, say for example, you have closed your eyes, and if you have touched something, say for example water or else some cotton. So just by closing our eyes, also you will just know it. So that one is known as interpreting touch. Next is vision and hearing. Vision and hearing is what? With the help of the cerebrum, you are able to see, and with the help of the cerebrum, like you are able to hear clearly, properly, and with the help of the cerebrum also, like you are able to speak. With the help of the cerebrum, you are able to reason. Reason means what? Say for example, suppose like if you didn't come to class today, if you didn't attend the class today, say for example, like because of some personal problem, you have some personal issues, that's why you couldn't attend the class. So how will you inform your teacher? You will obviously say, right, like because of so and so, I wasn't able to attend the class. So that one is known as reasoning. So the cerebrum helps you in what? In reasoning something, and as well as emotions, sad, happy, joy, all this, it comes under the cerebrum. Next is learning, like you are able to learn things, new things every day. So the cerebrum helps you in that.
Next is fine control of movement. Fine control of movement means what? Like you are able to control your movement. Understand? Like your daily physical activities which you are doing. So all these things it comes under the cerebrum. तो सेरेब्रम क्या है? ये सबसे बड़ा है ब्रेन का, और हम लोग को सेरेब्रम को राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर दोनों साइड में मिलेगा। और ये जो सेरेब्रम है अ, हम लोग को कैसे मदद करता है? इंटरप्रेटिंग टच मतलब अगर मान लो कि तुम मतलब तुमने आंख बंद किया है और पानी मतलब तुम्हारे सामने है और तुमने पानी छुआ है, तो तुम्हें ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि वो पानी है। क्यों? क्योंकि सेरेब्रम की मदद की वजह से। ठीक है। और नेक्स्ट क्या है? विजन एंड हियरिंग। विजन एंड हियरिंग मतलब अगर तुम अच्छे से देख सकते हो और तुम अच्छे से सुन सकते हो, तो किस किस वजह से हो रहा है? सेरेब्रम की वजह से हो रहा है। ठीक है, तो उसके बोल ओके। सो नेक्स्ट क्या है? एज वेल एज स्पीच, मतलब तुम अच्छे से बोल सकते हो, तो वो सेरेब्रम की मदद की वजह से है। और रीजनिंग मतलब तुम कुछ कारण दे सकते हो कि नहीं। से फॉर एग्जाम्पल तुम्हें कुछ हुआ है, आज का क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि तुम्हारा कुछ पर्सनल प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से तुम अटेंड नहीं कर पा रहे हो, तो तुम्हारे मैम या सर को क्या बोलोगे? मैम सर मेरा वो हुआ है, तो उसकी वजह से मैंने अटेंड नहीं कर पाया। तो उसको बोलते हैं रीजनिंग, कारण देना, कुछ कारण देना। नेक्स्ट क्या है? इमोशंस, मतलब सुखी दुखी वो सब सब कुछ है इमोशंस। लर्निंग मतलब तुम कुछ नया नया चीजें सीखते हो, तो वो सेरेब्रम की मदद की वजह से है। और लास्ट क्या है? फाइन कंट्रोल ऑफ मूवमेंट, मतलब तुम अच्छे से दौड़ सकते हो, चल सकते हो, काम कर सकते हो, तो वो सब क्यों कर सकते हो? सेरेब्रम की मदद की वजह से वो सब कर सकते हो। ओके, डिड यू अंडरस्टैंड थ्रू दिस पार्ट सेरेब्रम? डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. Okay, next is cerebellum. So this is the cerebellum. So the cerebellum, where it is located? The cerebellum is located under the cerebrum. This is your cerebrum, right? So it is located under this downside. तो ये cerebellum ठीक cerebrum के नीचे में है कि नहीं? ये जो cerebrum है ठीक cerebrum के नीचे में है। So this cerebrum, they helps in what? They helps in coordinating muscle movement, means coordination of your body while walking, while writing, while running. All these things they helps you in coordinating something. So this cerebrum they helps you in that. And next is what? Maintain body posture and balance. Like you are able to maintain your posture, like sitting, standing, walking, all these things, the cerebrum helps you in performing all these things. तो नेक्स्ट क्या है? सेरेबेलम। तो सेरेबेलम कहाँ पे है? ठीक सेरेब्रम के नीचे में है। ये जो सेरेब्रम है ठीक सेरेब्रम के नीचे में है। और ये हम लोग को कैसे मदद करता है? ये कोऑर्डिनेट मसल मूवमेंट्स करता है, मतलब हम लोग का जो मसल्स है ये मतलब एक साथ काम करने में मदद करता है। ठीक है, हम लोग का जो मसल्स है ये एक साथ काम करने में मदद करता है, जैसे कि अ, चलना, दौड़ना, उठना, बैठना, तो ये सब एक साथ काम करने के लिए मदद करता है। और मेंटेन बॉडी पोस्चर बैलेंस, मतलब हम लोग का जो पोस्चर है जैसे कि बैठना, खड़े होना, वो सब अच्छे से हम लोग का जो शरीर है अच्छे से मेंटेन करने के लिए, बैलेंस रखने के लिए ये सेरेबेलम मदद करता है। Okay. Did you understand everyone this cerebellum? Yes, ma'am. Okay, next is brainstem. So this is the brainstem. So the brainstem, where are they? The brainstem. They are here, in between your cerebrum and cerebellum.
means they are at the center. Okay, they are at the middle point. It is the cerebrum and the cerebellum. The brainstem is located just in the middle. And this brainstem, what do? They have certain performing automatic functions. Understand? They have certain performing automatic functions such as what? Such as breathing. You are able to breathe because of the help of the brainstem. Next is heart rate. Your cardiovascular system, your heart is like pumping the blood properly because of what? Because of the brainstem. The brainstem also helps in maintaining your body temperature, and also the brainstem they helps in what? They also helps in wake and sleep cycles. Means they helps in like sleeping as well as waking up. The brainstem also helps you in what? They help the brainstem also helps you in digesting something. The brainstem they also helps you in sneezing, coughing, then vomiting, and also swallowing the things which you eat. So all these are the things that are performed by the brainstem. I mean, with the help of all these things, they are able to do all these things. तो ये ब्रेन स्टेम कहाँ पे है? ये जो ब्रेन स्टेम है सेरेब्रम और सेरेबेलम के बीच में है. ठीक है, ये सेरेब्रम और सेरेबेलम के बीच में है ये ब्रेन स्टेम. तो ये ब्रेन स्टेम क्या करता है? हाँ, हम लोग का कैसे मदद करता है? मतलब ऑटोमेटिक काम करने में मदद करते हैं. जैसे कि ब्रीदिंग मतलब सांस लेना, और हार्ट रेट मतलब हम लोग का जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है, हम लोग का हार्ट जो है ब्लड पंप करता है कि नहीं, तो वो ब्लड पंप करने में और कंट्रैक्शन ये सब में मदद करता है. और हम लोग का बॉडी टेम्परेचर जो है अच्छे से मेंटेन करने के लिए ये मदद करता है. और नेक्स्ट क्या है? वेक एंड स्लीप साइकिल्स मतलब हम लोग का सोने का ढंग में भी काम करता है, मदद करता है, जैसे कि उठना, सोना, वो सब. नेक्स्ट क्या है? डाइजेशन मतलब हम लोग को जो खाने में डाइजेस्ट होने में मदद करता है. नेक्स्ट क्या है? स्नीजिंग मतलब छींकना, कफ करना, वॉमिटिंग करना, उल्टी करना और कुछ गिरना, वो सब काम करने में मदद करता है. Okay, is it clear about the brainstem, everyone? Yes, ma'am. Okay. Next is diencephalon. Diencephalon actually you have already got in your endocrine system, so I won't show you. You remember, na, in the endocrine system we have got hypothalamus, the hypothalamus, thalamus, everything. The hypothalamus helps in what? In controlling all the glands. It's not it. And thalamus was what was it? Metabolism. It's not it. Metabolism of your body. They help you in all those things. So I won't discuss with you anymore because we have already discussed in the endocrine system. Okay, next is different lobes of brain. So your brain has got 4 lobes. This one. It is divided into 4 lobes. First is frontal lobe, which lies at your front, this side. Okay. Next is parietal lobe. Parietal lobe is here and here, both sides. Okay, 2 you have parietal lobe. Next is what? Temporal lobe. Temporal lobe you have this side and this side. Temporal lobe. And the last is what? Occipital. Occipital is just at your back side. Okay, so these are the 4 lobes of the brain. First is frontal, which lies at your front. Next is parietal, which lies sidewise, both sides, 1, 2. Next is occipital, occipital here at your back side. Next is temporal, both sides, 1, 2. So these are the 4 lobes of the brain. Okay, is it clear, everyone, about the 4 lobes of the brain? Frontal, okay, I'm repeating again, frontal, front.
Parietal both sides 1, 2. Temporal here both sides 1, 2. Occipital here at the back. Okay, is it clear? Is it clear about the lobes of the brain? Yes, ma'am. Okay. Okay, is it clear everyone till here? In the next class, I will discuss with you all about one by one frontal. What does the frontal lobe do? What does the parietal lobe do? What does the temporal lobe do? What does the occipital lobe do? All these things we will explain in the next class. So I hope it's clear everyone. Today's class. Is it clear everyone? Yes, ma'am. Okay. Okay then, thank you everyone. So all the CRs, DRT,